इतना सा फर्क है एक बार सोच के छोड़ देने में और लग के कर दिखाने में। मान लेने में कि जिंदगी ऐसे ही कटेगी और सुबह 4 बजे उठ के सोचने में कि अभी तो बस शुरुआत है। किसी मैगजीन को हाथ में लेने में और उसी मैगजीन के कवर पेज पे होने में इतना सा ही तो फर्क है। वीआईपी सीट में और उसकी पिछली सीट में इतना सा ही तो फर्क है। वो जिसका मैदान ही खुला आसमान है वही कल जमीन पर तो था। पूछोगे तो बताएगा वो पंछी। ये एक दायरे में सिमटने में और पूरी दुनिया को दायरा बनाने में बस इतना सा फर्क है। इतना कितना है? इतना है या इतना है? जो नापेगा वो जाने कि जहां धरती और आसमान मिलते हैं, नानकुर से दूर, अगर मगर शायद से दूर, वहां भी दोनों में फर्क बस इतना सा है। धरती और 7वें आसमान में फर्क बस इतना सा है। ये एक अंतर प्रेरणा है। ये हमारी, आपकी, हम सब की अंतर प्रेरणा है। एक कदम, एक छलांग, एक बाजी, एक गहरी सांस और एक ललकार खुली हवाओं में कि हाँ मैं बना हूं उन फिजाओं के लिए, कि हाँ मैं बना हूं उन ऊंचाइयों के लिए जो ऊंची तो बहुत है पर नामुमकिन भी नहीं, क्योंकि मुमकिन और नामुमकिन में बस इतना सा फर्क है। धूप छांव में फर्क बस इतना सा है। तो बस चलिए फ्रेंचाइज इंडिया के साथ ये फर्क मिटा देते हैं। फ्रेंचाइज इंडिया, 20 years of ideas. A very good afternoon to all the dear friends. We warmly welcome all of you to our business opportunity of a chai webinar series. This is a webinar and a digital representation of the business opportunity which we are launching through our platform, webinar platform. This is a 45-minute session where first we'll invite the leadership team of the brand to talk about their brand, give you correct and the complete understanding about the business proposal with the help of the presentation. Then we'll move towards a panel discussion. During panel discussion, we would love to take all your queries, requesting everyone to use extensively our question and answer box. We welcome management team of Franchise India. Along with them, I also welcome Mr. Gaurav Arora, who will be the part of this particular webinar and hosting the webinar. And the business opportunity which we are launching today through platform of Franchise India is Innovative Design Associates. It's a premium brand from Delhi NCR, and today we have invited the leadership team of the brand, Ravi ji, to talk about the brand. He'll be sharing his insight about the business option for all of you. We also welcome Rajni ji. Thank you both of you for joining this particular webinar. May I request to start with the presentation from your side? Innovative Design Associates, this company was started in 2001, so it's been 21 years now. In June, we'll complete 21 years. And we have done over 350 projects, pan-India, from Jammu to Kochi, from Baroda to Agartala. And we do interiors, construction, and furniture. All sort of things related to interiors and construction. So we do architecture, interiors, construction, and furniture, as you can see. And we invite franchisees to be our growth agent. Now coming up, before I go to this, I would like to tell you that we have done over 150 retail projects, and I would share the presentation in which we have Jaguar, W, Apple stores, multiple stores. Then in brands in hospitality, we have worked with Yo China. Then we have worked with Costa, multiple outlets, now 35 outlets of Yo China. Can I share our presentation profile, or is it okay? I'll just tell that what all brands we have worked with. And this is a small presentation which we have made. So around 350 we can continue with the we have done pan-India. Okay, so now we have done around 150 outlets of retail outlets and around 80-90 hospitality, in which we have worked with the Hyatt, the China Kitchen, IHOP, Costa,
Pizza Hut. Recently, we done Surabi. We are working with Bola Sizzler. We have worked with Polotar. So various brands we have worked with. In retail, we have worked with, as I have told you, Apple, Lancome, Jaguar, name a few, W, around 40 outlets. Then we do residential, premium residential apartments and villas, and we do construction for that. We have recently completed the work of 𝐕 Singer. So that was 4-5 days back. We have handed over the project, and right now we are working on various construction as well as high-end residential interiors projects. We are working in Magnolia, work with Aurelia. In Aurelia, we have various high-end condominium penthouses, farmhouses, and independent villas. And this is brief about us, and we do furniture, modular furniture as well as customized furniture. So how a guy can be part of our franchise. So as I have told, this 20 years and 350 projects in India, and this company was started by Vibhuti Jaiswal, my wife, and I joined this company around 12 years back in 2010. She's an interior designer, and she has got experience of around 25 years. And I am a BD professional by qualification, MBA in information technology, and I'm in this company from last 12 years. As I have told you, these are services, architecture, interiors, construction, furniture we do. This is our organization structure. We are around 30 guys, and we have got site engineers and supervisors, project managers, and this is the hierarchy of the organization. Our target is to become top 5 company in coming 5 years. By 2027, we want to be in top 5 companies in Delhi. And so we are, it's a one-time investment, franchise fees of, by mistakes, written 30,000, 3 lakh rupees, not 30,000. Fine, total investment of 3 lakh rupees per annum, no additional investment. And we expect a business from 𝐈𝐧𝐭 around 3 CR of, and minimum 5% of the revenue share will have. It's going to be typically around 10%. So, broadly about, and I'll come to the detail of this thing, that how it can go up to 40-50 lakh rupees per annum also profit. Who can be our franchisee, property agents, PMC companies, architect and design consultant, property management companies. This is typical chart of how much required. They can expect a return and 5% on property value. 10% investment can have investment can be 6 max. So this is brief about us. Over to you, Gaurav and Kanika. Hi, good afternoon, everyone. So Raviji, thank you so much for a small and a crisp presentation. However, I request you to please again log on to the presentation, because there are certain questions which we have from the audience side, and we wish you to please take up these questions. Because you talked about the investment opportunity, you talked about the business year-on-year basis, you talked about the minimum order value, you talked about the maximum business one can do. You also talked about the profit sharing, but we want to understand, right, on the behalf of audience who is viewing us and who is basically here to understand about your business model. So they would like to understand the modalities which are involved, the process flow which is to be followed, right? What is the right way to basically approach their target audience, who is going to be the target audience, and what is the right course of action for them to reach up to their target audience, right? What is the support which is going to be rendered by the company, how you are going to render that support, and which all cities you want to basically set up your franchise partners, and what is going to be the course of action from today
till the time they become your franchise partner, and once they are aboard, how you are going to basically help them and handhold them and take them to the level that they will start working on their own, because it's an opportunity where within the least possible investment of maybe 3 to 5 lakh rupees, 6 lakhs, they are going to become an entrepreneur. And it may be a first time for them to become an entrepreneur. तो एक जर्नी का आप फ्लो बताइए उनको, प्रोसेस बताइए आप उनको, किन कंपनीज को मिल सकते हैं, तो थोड़ा सा आप इस पे इंसाइट दीजिए सर. The barrage of questions which is coming from Gaurav. Thank you so much. Now, if you can put question one by one, who can be our franchisee? Property agent, because see, property agent, they do the transaction, they get the property for their client, and almost all they want to get it done. The place, either it's a commercial space or a residence or whatever, so they want to get it done. It is fit out, so they don't have to go anywhere because they have already sold the property or leased out the property. So that's a low-hanging fruit for them. So that conversion is going to be high because they also have a certain command on the person who is taking the property. That's one thing. So property agent can be a really good connect. Then PMC companies, like companies who design MEP or these kind of services. सर जैसे आप PMC कंपनीज की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा PMC कंपनीज को आप अगर इलैबोरेट कर सकें, अगर इसकी एब्रिविएशन को आप, हाँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हो सकते हैं जिनको शायद आपकी टेक्निकल नॉलेज का इतना ज्यादा पता ना हो, तो अगर आप उनको बताएंगे. PMC companies, full form of PMC is project management companies, project management contract companies, the companies who take the project management of certain project, maybe LTS project or sale project. So suppose some villa is coming up, a township is coming up. So those people, they are the companies who take the owners of getting the work done. They plan the things. So they are primarily a project management company. Their architect and engineering firm could be different, but they are the agency who actually supervise all the things, that things are going in proper way, and it's being whatever has been planned is going according. The work is going according to that. So that's called project management. So in that, they are electrical project management company, MEP companies. That's mechanical, electrical, plumbing companies. Then there are workflow scheduling companies also who look after the work. Then there are several PMC companies. So these companies, because they are involved in a similar kind of project, so people may come to them. Okay, they want to get the fit out done or LTS work done. इसमें आप रवि जी थोड़ा सा ये एलैबोरेट करिए कि अगर कोई आपके पास प्रॉपर्टी एजेंट आता है या कोई PMC कंपनी आती है या कोई ऐसा प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनीज आती हैं, तो उसमें उनका रोल क्या रहेगा, आपका रोल क्या रहेगा, इसके ऊपर आप थोड़ा सा एक बार अगर if you throw some light. See, bigger companies like Tata or JL, they won't be our PMCs, so they are too big. Smaller PMC companies who there are smaller companies also who are into PMC. So HVAC and all they are doing, so they can become our agent because they already have a client base and they are doing the same work. So they can get the client for us, and they'll get additional income from that. तो अब जैसे आपने इंडिविजुअल्स का भी बात करा हुआ है यहाँ पे इस प्रेजेंटेशन में कि कोई एक इंडिविजुअल है, सपोज आज मैं एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूँ, राइट, और मैं आपके बिजनेस में जुड़ना चाहता हूँ, तो मेरे लिए ये बिजनेस कैसे बेनिफिशियल हो सकता है? क्योंकि जरूरी नहीं है कि मैंने कभी प्रॉपर्टी एजेंसी का काम किया हो, लेकिन मेरे अच्छा नेटवर्क है, आई एम सोशली अ वेरी एक्टिव पर्सन, आई हैव लॉट ऑफ पीपल इन माय नेटवर्क एंड आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास फैमिली, maybe I have a contact with an HNI or an ultra HNI, तो उनके साथ हम कैसे कर सकते हैं? हम इसमें बैंक एम्प्लॉयज के लिए भी बात कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर्स होते हैं जो होम इंश्योरेंस को भी बेचते हैं, तो वो लोग भी हमारे टारगेट ऑडियंस बन सकते हैं. तो इंडिविजुअल्स को आप थोड़ा सा डिफाइन करिए और उसमें रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज को एक बार डिफाइन करिए सर, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारा. I'll come to that. See, individuals, those who have got good contacts, so people come across. Once they become the franchisee, we'll train them. And see, basically, it's primarily there are three. You can categorize into 3 pages. One is pre-sale, one is during the sale, and one is post-sale. So pre-sale, they need a lot of technical know-how.
that what is what and what has to be done, and there are certain commercial things involved, there are technical things involved, so which is backed by our engineering team and cost team and pre-sales team. So suppose somebody has got a query that okay, somebody wants to get a renovation done or construction done. That's the primarily lead, we call it lead or inquiry. So they can come to us, okay, because they are franchises, so they can come to us and say, refer the lead to us, this is the inquiry. So we, in a way that in initial 15 days or whatever, we'll train them how to handle those questions, what all kind of questions they can come across. So their basic technical knowledge will tell them. Now it'll come to our company's part, that our engineers and people, they'll go and meet the prospective client, and accordingly they'll they'll understand the work, they'll make the BOP, give the estimation, close the work, and start the work. That's the pre-sale. Once we start the work, that's the during the sale period. Once the work is done, that's the post-sale. We give the that comes into post-sale. So these are the phases, and a person who has got good contact can be our franchise, because we will back them from start to end. तो इसमें आप क्या बोल रहे हैं, मैं नटशेल में एक बार बताना चाहूंगा, क्योंकि कार्तिक हमारे पास एक ऑडियंस में है, हमारे व्यूअर हैं, जो ये क्वेश्चन इन्होंने अपना Q&A बॉक्स में पोस्ट किया है कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी एक पेरेंट कंपनी की और एक फ्रेंचाइजी की। तो इसमें कार्तिक जी आपको आई थिंक आंसर मिल गया होगा, बट आई विल रीफ्रेज इट फॉर यू एंड रीआइटेट इट फॉर यू। तो बेसिकली आपका रोल रहेगा कि आप जाके मार्केट में या आप किसी भी प्रॉपर्टी एजेंट के थ्रू या कहीं से भी आप एक लीड लेके आएंगे। वो लीड बेसिकली क्या होगा, वो किसी भी तरीके का बिजनेस हो सकता है जो ये कंपनी करती है। जैसा आपने देखा कि ये कंपनी का बेसिकली जो मेन बिजनेस है, राइट, वो डिजाइनिंग में है, फिट आउट्स में है, कंस्ट्रक्शन में है, राइट, और फर्नीचर में है। तो आपको किसी भी तरीके का अगर कोई भी लीड मिलता है जिसको डिजाइन, फिट आउट या कंस्ट्रक्शन या फर्नीचर में से कुछ बाय करना है या उसको कस्टमाइज करवाना है, तो आप बेसिकली उनसे उनका बेसिकली जो वर्क है वो समझेंगे, उसका पूरा बेसिकली एक नोट बनाएंगे। आप वो प्रोजेक्ट की गाइडलाइन को फिर शेयर करेंगे इनोवेटिव डिजाइन की टीम के साथ। इनोवेटिव डिजाइन के जो इंजीनियर्स हैं या जो सुपरवाइजर्स हैं, वो लोग बेसिकली आपसे उस प्रोजेक्ट की डिटेलिंग लेके एक विजिट वहां पे अलाइन करेंगे। विजिट के बाद वहां पे पूरा बेसिकली एक आर्किटेक्ट या जो भी फिट आउट में टेक्निकली वो अपना डायग्राम बनाना है या जो भी कंस्ट्रक्शन का एक लेआउट बनाना है, वो उसके लिए उसका क्या मटेरियल यूज होगा, उसकी क्या ड्राइंग रहेगी, उसमें क्या कॉस्ट एस्टिमेशन रहेगा, उसका पूरा एक प्रपोजल सबमिट करेंगे। उस प्रपोजल सबमिट के बाद जब वो ऑर्डर क्लोज हो जाएगा, तो उसके बाद जो आईडीए की टीम है वो इसको एग्जीक्यूट करेगी। तो आपका जो रोल रहेगा वो मोटा जो रहेगा वो फैसिलिटेशन में रहेगा कि आपने एक लीड जनरेट करी है, वो लीड जनरेट करके रिक्वायरमेंट को आपने आईडीए को दिया है, आईडीए ने अपनी तरफ से उसका एक कॉस्ट एस्टिमेशन देके प्रोजेक्ट में जो इंक्वायरी है, जो लीड है, उसको सबमिट किया है। ऑर्डर क्लोज होने पे उसको एग्जीक्यूट किया है, और जो भी फंड्स आएंगे, जो भी इस प्रोजेक्ट में कॉस्टिंग होगी, सपोज 5 लाख का ऑर्डर होता है, 10 लाख का ऑर्डर होता है, 50 करोड़ का ऑर्डर होता है, उसमें एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो आपको आपका इंसेंटिव का मिलेगा या आपको आपकी एक रॉयल्टी मिलेगी उसके अंदर, जिसको फ्रेंचाइजी की बेसिकली एक इनकम बोलते हैं। तो इसमें मेन रोल जो आपका रहेगा वो सेल्स का रहेगा, एज अ सेल्स एजेंट का रहेगा, एज अ लीड सेल्स का रहेगा। I hope I'm making it very clear, Ravi ji, to the audience. Exactly the same thing you have told. Lead generation and initially to initiate the inquiry, और एक लास्ट तक भी क्लाइंट के साथ एक रिलेशनशिप एंड क्लाइंट हैंडलिंग कनेक्शन, बट नॉट टू मच टेक्निकल इन्वॉल्वमेंट। टेक्निकल इन्वॉल्वमेंट रहेगा। तो अब जैसे आप बात करते हैं कि 3 लाख रुपए की फ्रेंचाइज फीस से कोई भी आदमी, एक इंडिविजुअल हो, एक कॉमन मैन है, वो आपके बिजनेस में बेसिकली आपके साथ एक फ्रेंचाइज पार्टनर बन सकता है। तो आप जो ये फ्रेंचाइज पार्टनर बनाएंगे, तो इसमें आप बेसिकली 3 लाख रुपए जो ले रहे हैं, वो कोई टेरिटरी डिमार्केशन का ले रहे हैं या फिर किस तरीके से आप उसका एक एरिया डिफाइन करेंगे? तो सपोज आज that'll be territory based, but we'll have at least 2 guys, because depending on the territory, like in for city also, if he is able to cater to the entire city, then solid. Otherwise we'll have 2 for one city or one region, 2 guys for one city or one region. तो हम बात suppose we talk about Gurgaon. ठीक है, suppose we talk about Gurgaon. So Gurgaon में initially we'll have one, but Gurgaon is too big a territory for one person to cater to. We can have 2 guys, but initially we'll have one.
सो हम लोग पहले एक टेरिटरी में एक इंडिविजुअल को या एक हम फ्रेंचाइजी को असाइन करेंगे। उसके बाद जैसे जैसे हमारा मार्केट ग्रो करेगा और अगर हमें नीड लगेगी तो हम दूसरे फ्रेंचाइजी के लिए मार्केट में कोई भी एड रन करेंगे। अदरवाइज हम एक्सक्लूसिविटी दे रहे हैं एक टेरिटरी के लिए। एम आई राइट? ये जो फ्रेंचाइजी का आपका अग्रीमेंट रहेगा, ये कितने टर्म के लिए रहेगा? इज इट गोइंग टू बी 1 year, this 3 lakh rupees franchise fees that we're talking about? Yes, is it valid for 1 year, 2 years, 3 years? 3 lakh, and then renewal based on the performance that we can negotiate. Second year. See, primarily we are not here to make money from franchise. Frankly, we want the franchise to make money along with us. Okay, तो इसमें जैसे आप बात कर रहे हैं कि आपने किसी को फ्रेंचाइजी अपॉइंट किया और उसने बेसिकली इस बिजनेस का कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो इनिशियली आप उसके लिए क्या क्या ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करेंगे और क्या क्या और सपोर्ट रहेगा ताकि वो मार्केट में जाके आईडीए को जो है उसकी सर्विसेज को एक्सप्लेन कर सके? क्योंकि ब्रांड की अपनी एक टेक्निकलिटी है जिसके तरीके से उस ब्रांड को प्रेजेंट किया जाएगा, और उसके लिए कुछ इनिशियल लीड जनरेशन में भी आप हेल्प करेंगे। तो थोड़ा सा इसमें भी आप एक बार लीड जनरेशन में we can run we can be present in social media, so we can generate leads for particular region. If the lead comes in particular region, it will be assigned to the franchise. Suppose in Gurgaon, maybe in Hyderabad, because we are planning to go in NCR region and Hyderabad, that's nearby nearby NCR region, and a couple of cities to start with, maybe Hyderabad and Bangalore. Okay. So आप बात कर रहे हैं कि NCR, Hyderabad, Pune and Bangalore are the major 5 areas, 5 geographies where we are looking at setting up the initial franchisees. Yes. Right? तो इसमें जैसे हम बात करते हैं कि आपको 3 लाख रुपए दिया, तो उसके बाद आप उसको कितने दिन का ट्रेनिंग रहेंगे? वो ट्रेनिंग कहाँ पे होगा? Is it going to be an on-site training or is it going to be that you calling people in your office and will call the franchisee to Delhi and will introduce, because it's much more important for that person to understand the team strength, and it's also good to know. So it'll be a 2-day session. They'll come, they'll stay in Delhi near to our office. We'll make them stay. You don't have to pay anything. Once they pay, you don't have to pay anything. Once they'll come, we'll give them the toolkit. We'll make them understand for 2 days. It's not very elaborate training because in project sale primarily. So we will make them understand what we do. They'll meet the team. They'll have once they meet somebody in person, so it gives them a lot of confidence that what kind of companies that they are working with. So physical meeting will be required. So they'll come for 2 days. Initially, there will be introduction. Second day will be sales pitch and what all things they are supposed to do and how to go about the market. 2 days training, and often on on fortnightly basis and as and when required. So we'll train them on phone call. So this is how we have planned. So एक आपका 2 days का रेजिडेंशियल ट्रेनिंग रहेगा और उसके बाद हर 15 दिन में आप एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग करेंगे अपने सभी फ्रेंचाइजीज के लिए, और ये प्राइमरली जो रहेगी वो सेल्स के लिए रहेगी कि सेल्स को कैसे आपने डिफाइन करना है, कैसे टारगेट्स को बेसिकली आइडेंटिफाई करना है, उनको अप्रोच करना है और कैसे उनसे बेसिकली ऑर्डर में आपने कंक्लूड करना है। उसके अलावा आप उनको लीड जनरेशन में हेल्प करेंगे सोशल मीडिया के थ्रू, और जिस भी टेरिटरी में आपका फ्रेंचाइजी रहेगा उसको जियो टैगिंग करके आप वहां से लीड को जनरेट करेंगे। जो भी लीड्स आपके सर्वर में आएंगी वो लीड्स डायरेक्टली उस एक्सक्लूसिव टेरिटरी में जो हम फ्रेंचाइजी अपॉइंट कराए उसको वो जाएंगी, वो मीटिंग करेगा, इनिशिएट करेगा और आपके साथ वो टेक्निकल सारा डिस्कशन रहेगा। तो ये फ्लो बिल्कुल एज इट इज रहेगा जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, राइट? यस। तो आप इसमें मुझे बताएंगे कि सपोज 3 लाख रुपए का हम जैसे कर रहे हैं तो इसका आरओआई क्या एक्सपेक्टेड है आपको एक साल में? व्हाट इज द मिनिमम ऑर्डर वैल्यू यू थिंक दैट द फ्रेंचाइजी इज गोइंग टू जनरेट इन दिस बिजनेस, एंड व्हाट इज गोइंग टू बी द पे आउट टू द फ्रेंचाइजी? How it's going to work? See, the next slide is about that only. See, we franchise fee is 3 lakh rupees, and see, we usually take a business of not less than 30 or 40 lakh rupees. We do not take order less than 30 lakh rupees. That's the minimum value of orders we take. Fine. So average size could be around 50-60 lakh rupees of one ticket size I'm talking about. And suppose for 1 year, if I'm talking about, and somebody does a business of around say
2 CR is not a very 2-3 CR is not a very big number. If you are able to do 1 or 2 order closure, maybe of 1 CR 50 lakh, 2 or 3, so it's going to be around 2 to 3 CR. When talking, we have written 5%. 5 is the minimum. Normally, it can be around 10%, and we call it profit share. Profit share. Okay. Suppose we are talking about, say, 3 CR order closure in 1 year. Fine. So 10% of is going to be around 30 lakh rupees. 3 lakh rupees you are getting a profit share of 30 lakh rupees. That's a very, very lucrative offer. अच्छा, तो आप बोल रहे हैं कि आप 3 करोड़ रुपए में 10% एज अ पे आउट देंगे? Yes, 5% is minimum. It can be, see, 5% is minimum. Nothing less than 5%. It can go up to 10% also. और इसमें जो उनका खर्चा है, वो खर्चा क्या रहेगा? एक ऑफिस उनको बनाना रहेगा, कोई मैन पावर वहां पे रखनी रहेगी उनको? It depends. It depends. You don't have to make, because see, if they can have a co-working space, don't have to take an office. They can have a co-working space, and they can run the office from there. It's not very costly affair. It's very, like, you get in 8 to 10,000 rupees in very swanky office. You get co-working space. You need just office card, and need not to have an office exactly. And people see how there are two things. One feature that if we get the order in, suppose in Hyderabad, so our representation is there, but the team moved from Delhi to get the work done. So all the work will be done from Delhi. The team will move from here. There'll be a site engineer, then project manager, project head. All the things, and things are controlled from Delhi only. Okay. ओके, सो विच मीन्स अगर कोई 3 लाख रुपए देके आपके बिजनेस में जुड़ रहा है आपके साथ, तो ये 3 लाख रुपए तो वो फर्स्ट ऑर्डर वैल्यू में ही रिकवर कर सकता है, बिकॉज अगर हम बात कर रहे हैं कि 30-40 लाख रुपए का हम एक ऑर्डर मिनिमम लेते हैं, सो दिस इज लाइक वन ऑर्डर इन योर गेम, you are 100% profitable, and then whatever new orders you are going to get in the forthcoming months are going to add in your profit. So which means this is one business wherein the just 3 lakh rupees people are going to make more than 3 lakh rupees every month. तो साल का 36 लाख रुपए तो वो बेयर मिनिमम कमा सकते हैं अगर आपके बिजनेस में 3 लाख रुपए के साथ जुड़ते हैं, और लीड जनरेशन भी इसमें आप दे रहे हैं, एक्सक्लूसिविटी भी आप दे रहे हैं, टेक्निकल नो हाउ भी आप सारा दे रहे हैं, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन आपकी टीम करेगी. सो आई थिंक it's a tremendous opportunity for people who are aspiring to be a businessman for the first time in their life, and they can start the business with as low as 3 lakh rupees plus GST investment. तो इसमें मैं चाहूंगा सर आप कोई और सक्सेस स्टोरी अपनी शेयर करना चाहेंगे, that people who have worked with you in past in this type of format, and how early they have got the success. What is the earliest possible time you think that people will be able to get the first order? I'll tell you, I'm the biggest example of this. See how we started. See, this company was started in 2001, fine, and we were doing only designing furniture. So in 2006, I was sitting with one of my friends in Bangalore. Okay, I was sitting with him in Bangalore, and his name is Tamim Ansari. He's a good friend. He's from Bangalore. So I was sitting with him. So he was saying, Ravi, Delhi में ना बहुत opportunity I get, but I'm so afraid to work in Delhi. तो आप मेरे लिए Delhi में काम करोगे? He'll get the order for me, and I have to execute it. It's the same thing. Like he was getting the order for me, and I was executing, and we had a certain percentage of whatever percentage of profit we'll share. And we worked from 2006 to 2010 till I joined this company with my wife. So it's a success story. On that, we worked with Bossini, then Max, a lot of projects we did together. तो इसमें जैसे this is how it's a very, very profitable. This is very interesting, Ravi जी. यहाँ पे आपने सिंस सारे मार्की ब्रांड्स का नाम लिया है प्रेजेंटेशन में, जिनके साथ आपने काम किया है, चाहे वो रिटेल स्पेस से हो या F&B स्पेस से हो. सो आई एम श्योर कि अगर आज आपके पास मैक्स का या लेट्स से टाटा का या कोई भी आपके पास एक मार्की ब्रांड का पास्ट एक्सपीरियंस है, तो वो अगर आप एक नया शोरूम अपना डालते हैं, सपोज आपके पास कोई ऑलरेडी कोई डील चल रही है या आपके पास ऑलरेडी कोई कॉन्ट्रैक्ट है लाइफस्टाइल का या मे बी टाटा का या कोई भी ऐसा मार्की ब्रांड का, और अब आपका एक नया फ्रेंचाइजी अपॉइंट हो जाता है बैंगलोर में, और वो ऑर्डर आप उसके थ्रू ही एग्जीक्यूट करेंगे या फिर वो डायरेक्ट आपका ही ऑर्डर माना जाएगा? और वेरी क्लियर,
about the territory. Suppose we are talking with somebody and it's an existing client. Suppose we have got a client who are existing with us and he wants to open in, say, in Hyderabad. That's going to be company's lead because that franchisee has not done anything in that because we are already working on that. That's going to be a company lead, not the franchise lead. Suppose a virgin lead comes because we haven't done anything, we have done some promotion and there is a lead, we pass that lead to the franchisee. But the company, suppose we are working with a lot of brands and they want to open maybe in Hyderabad, so that's going to be company's lead. So suppose you have done work with the next brand and you have no more order in the funnel as such, but the franchisee is going to basically contact them on behalf of IDA because you have already worked with that brand and you already have a alliance, and your franchisee would like to now again tap up, knock the door and would like to pull new orders because you were not physically available and now he's become a little more aggressive. There is franchisee lead. That is, so वो franchisee lead में count होगा, right? अगर सिंपल सा है, अगर एफर्ट उनका है तभी जाएगा. अगर कांट जस्ट बिकॉज टेरिटरी है और मेरा बिजनेस है, आई बी वेरी ऑनेस्ट नाउ फ्रेंड, और टेरिटरी उनको दिया हुआ है, वहां पे कोई अभी मान लो कि वी हैव डन एंड वी हैव गॉट अ रिलेशनशिप ऑफ 10 years, तो वो दैट दिस इज नॉट गो टू हिम. हमारा पुराना क्लाइंट है, वी आर नॉट वर्किंग विद देम, दैट्स द थिंग विल टेल देम ना एंड व्हाट ऑल क्लाइंट इज, सो दे कैन also get the database from us. Okay, we have got a lot of database where we haven't touched base with our client. We work, they can work there. There's going to be their client. Great. अभी जैसे बहुत से लोग हैं जिनको हम टच बेस किया 2 साल से, difficult ना to get touch with everybody. तो अब उनसे वो करते हैं तो that's going to be their client. तो हम कोई ऐसा प्रोटोकॉल बना सकते हैं कि जब ट्रेनिंग के लिए हम फ्रेंचाइजीज को इनवाइट करेंगे हमारे हेड ऑफिस में, तो हम वो डेटाबेस शेयर करेंगे उनके साथ. तो एक एग्जिस्टिंग हमारे पास प्रोस्पेक्ट का लिस्ट है और वो प्रोस्पेक्ट को इनिशियली नॉक करेंगे एंड वी कैन स्टार्ट हैविंग सम ऑर्डर्स कमिंग इन. तो इसमें क्वेश्चन आया है हमारे व्यूअर का, राइट, विनीत कंवर जी हैं हमारे, तो उनका आया है कि फॉर द नेगोशिएशन विद द कस्टमर who is going to be the right person? So is it the franchisee or the parent company? कौन इसमें negotiate करेगा? Because technical know-how तो आपके पास ज़्यादा है. Parent company करेगी, but will be in loop. Franchisee हमेशा loop में रहेगा. Franchisee हमेशा loop में रहेगा. तो जो भी discussion रहेंगे वो बहुत ही transparency के साथ होंगे. और mail में discussion में will be part, because see, at times there are certain things which we know because we are doing this thing day in day out from last 20 years, so we know the technical and commercial aspect of it. Okay, right. But the franchisee will be kept in loop in each and every step. Franchisee will be kept in loop, right? So I think Mr. Kanwar, you have got your answer. So for the negotiation or for any sort of commercial or the technical discussion, it is the parent company which is going to travel or which is going to lead the discussion. और जो भी उसमें क्लोजर्स होगा उसमें आपको आपका शेयर मिलेगा with no if and but, with no discussion and with no negotiation between the franchisee and the parent company. I want to clear 2 things here about the negotiation. Suppose there is an inquiry, we have made the estimate and sent it to the client. The franchisee is in there in loop. Suppose we have given a estimate of say 1 year, so now they can take the mandate from us कि अभी कितने में close करना है, because at times फोन पे बात करने में कितने बार closure नहीं होता, because the person maybe in Hyderabad is sitting there. So suppose XYZ, suppose Ramesh is the franchisee there, so I can ask Ramesh कि आप जाओ वहाँ पे, you can just go and negotiate, but इससे नीचे नहीं आना, you have to close in 96, 97, then you can call me, अच्छा 96 में close कर दो क्या, that's how it can be closed, because अभी भी होता है, my team goes, it's not possible for me to go everywhere. तो पूछते सर इतने में कर दूं क्या क्लोज, ऐसे ही होता है ना, क्या बॉस से पूछते हैं या फ्रेंचाइजी मास्टर प्रिंसिपल से they can ask me can I close in this month. So this is one way that can be closed also, because physically हमारे लोग कितने बार नहीं होंगे वहां पे. Second, we'll have the clarity, there is a minimum profit share that's at least 5%, not less than 5%, and it can go up based on what kind of margin we are getting from the client and what kind of relationship and what kind of profit he can drive from the client. Franchisee can drive from the client. It can go above 10%. Usually, it doesn't happen that way, but it's going to be 5 to 10%. I don't want to किसी का expectation. I don't want to raise so much कि भाई 20% होता है वो होएगा नहीं, because nobody is going to give that much money.
Okay. So Norm I is think going we to have around covered. 10%. Got it. So it will range from 5% to 10%, right? Minimum 5, usually 10. It can go बहुत कम होगा, 10 से ऊपर जाने के chances कम है, but yes, it can go up little up. बट हम 7-8% को एवरेज ले सकते हैं। तो अगर कोई एक साल में 1 करोड़ रुपए का बिजनेस कर रहा है तो 7-8 लाख रुपए की इनकम इंडस्ट्री नॉर्म 7-8% इंडस्ट्री नॉर्म। सो नटशेल में हम ये बोल रहे हैं कि अगर कोई फ्रेंचाइजी आपका साल में 1 करोड़ के ऑर्डर लाता है, 10-10 लाख के 10 ऑर्डर लाता है, दिस इज जस्ट टू कोट एन एग्जांपल फॉर पीपल हु आर व्यूइंग अस। अगर 10 लाख के हम साल में 10 ऑर्डर लेके आते हैं और हम 1 करोड़ का टोटल बिजनेस करते हैं, राइट, नेगोशिएटेड वैल्यू पे, तो उसका 7-8% का जो हम एवरेज बात कर रहे हैं, तो 8 लाख रुपए की हमारी उसके अंदर बेयर मिनिमम एक इनकम अपॉर्चुनिटी बन जाती है। और इसमें हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ 3 लाख रुपए का है, जिसमें की एग्जीक्यूशन सारा कंपनी का है और लीड जनरेशन भी कंपनी हेल्प करती है। इट इज नॉट दैट दे आर नॉट गोइंग टू वर्क ऑन देयर लीड जनरेशन, बट यस, आपकी लीड जनरेशन से भी अगर कोई बिजनेस होता है तो वो भी उनका काउंट होगा। सो I think viewers, this is one of an amazing opportunity that Franchisee India has introduced in last 6 months, because within the span of maybe 10 days, 15 days, if you get a first order of worth, let's say 30 lakh rupees, you are going to get your income, your capital back, right? So just 30 lakh rupees of order and you're going to get about 3 odd lakh rupees as a payout from the parent company. I think Ravi ji, I must give a heads up here कि इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आई थिंक व्यूअर्स के लिए नहीं हो सकती, फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स के लिए नहीं हो सकती, या कोई भी एक ऐसा हमारे लिए जो टीजी हमने डिफाइन करे हैं, प्रॉपर्टी एजेंट्स हैं या कोई आर्किटेक्ट है या कोई सिविल कॉन्ट्रैक्टर है या इंडिविजुअल्स हैं सच जिनके कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं सोशल नेटवर्क में और उनका बेसिकली कंस्ट्रक्शन में या इंटीरियर्स में एक अच्छा अपना पैशन है कि उनको ये बिजनेस करना है, राइट। आजकल जैसे हमने देखा है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, घर से काम करती हैं, राइट, उनका अपना सोसाइटी में एक अच्छा नेटवर्क है, तो दे कैन बी ऑल्सो आवर टारगेट ऑडियंस, क्योंकि मात्र 3 लाख रुपए में उन्होंने फ्रेंचाइज फीस देके आपके साथ एसोसिएशन बिल्ड कर ली है, कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदना, कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं करनी, एक बहुत ही टेक्निकल सोफिस्टिकेटेड व्हाइट कॉलर जॉब है जिसमें उनका काम रहेगा बेसिकली जाके सिर्फ और सिर्फ आइस ब्रेक करना है, एक कनेक्ट बिल्ड करना है, रिक्वायरमेंट को समझना है और रिक्वायरमेंट पेरेंट कंपनी के साथ शेयर करके उस ऑर्डर को प्रोसेस करना है। So I think it's a great opportunity. We have another question from one of our viewer who is asking that what is the typical time to execute any order? एक typical time क्या होता है from the time we take the order? Normally construction will take 1.5 years, within 3 years. Only gray structure will take around 7 months, 8 months, and overall execution within days will take 1.5 years. Interiors of residence will take around 4 months, depends, 4 to 6 months, and commercial project will take around 30 to 90 days. So minimum 30 days से लेके और हम 18 months के प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन होगा तो अगर इंटीरियर्स करते हैं तो नॉर्मली 3 से 4 महीने में से नॉर्मली आप लीव द कंस्ट्रक्शन पार्ट ना, इंटीरियर्स पार्ट विद फर्नीचर नॉर्मली 3 से 4 महीने में हो जाता है, 3 से 4 महीने में हो जाता है। तो जनरली हम जो बात कर रहे हैं 30 दिन से लेके और 180 डेज की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हमारे टिपिकली जो ऑर्डर्स जो होते हैं 30 दिन में सिर्फ रिटेल के होते हैं, वो वनीला सोर्स होते हैं 30 दिन में, 30 डेज में, बिकॉज उसको ज्यादा कुछ करना नहीं होता। नॉर्मली आप मान के चलोगे जो रेस्टोरेंट होएगा या कोई व्हाटएवर यू मेक ना, तो 3 महीना, दैट्स व्हाई वी हैव इन रिटर्न, देखो ना 3 to 6 months वी हैव रिटर्न, अगर इफ यू लुक एट दिस ना, we have written 3 to 6 months, अगर if you 3 to 6 months, एक प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल इज अराउंड 3 months, 3 महीने लेके चलो मोटा-मोटा 20 years को। कंस्ट्रक्शन इज लॉन्गर ड्यूरेशन, कंस्ट्रक्शन इज अ लॉन्गर ड्यूरेशन, बट कंस्ट्रक्शन का फिर ऑर्डर वैल्यू भी तो सर बड़ा हो जाता है ना, बड़ा होता है। जनरली हम बात करते हैं आज की डेट में 2000 रुपए स्क्वायर फीट की बात करते हैं, नॉर्मली हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो ज्यादातर हम वी आर टॉकिंग अबाउट इंटीरियर्स एंड फर्नीचर, जो कि बहुत ही कस्टमाइज्ड रहेंगे और वो आप मान के चलिए कि 3 से 4 महीने का ओवरऑल टर्न अराउंड टाइम रहेगा। So Amar ji, I think you have got the answer. So I still welcome. So I think more or less we have discussed on all the queries which could have been in the mind of the viewers, and from the investment perspective, from the turnaround, from the income opportunity, from the territory demarcation, which markets we are looking at, exclusivity, right, roles and responsibilities, KRA definition, वो सब के ऊपर हमने बात कर लिया है। फिर भी I welcome the questions right from the viewers. So viewers,
we have last 5 minutes to basically close our discussion, and we'll get back to you on the second level discussion, and we will try and arrange your call with Ravi ji and his team on one-on-one basis. Whoever is interested, you can basically mention your interest in the Q&A box or in the chat box, and we will take your queries, we'll take your questions to the management team of IDA, and we'll help you to basically sort it. Should you have anything unclear even after this discussion that we have had today on the Zoom call with Ravi ji. इनकी टीम से अगर किसी को मिलना है तो आप इनके ऑफिस में विजिट कर सकते हैं. You can inform Franchisee India team, and Franchisee India team will take them to their office for a one-on-one discussion with their team, also to see their office. And should you want to visit one of their projects to basically see that what is the quality of work that they are doing and the kind of support system that they are providing to their customers, वो भी आप एक बार जाके चेक कर सकते हैं. तो कहीं से कहीं पे भी आपको कोई भी फैसिलिटेशन चाहिए, कोई भी आपको डीप डाउन करके नॉलेज लेनी है, तो आप प्लीज Q&A बॉक्स में, चैट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस को डाल सकते हैं, आप अपनी क्वेरीज को शेयर कर सकते हैं, और आप फ्रेंचाइजी इंडिया टीम को कनेक्ट कर सकते हैं. हम लोग whatever best possible way, we are going to help you, support you, and help you to basically get the matchmaking done, get the deal done with the IDA and his team. So Archana, over to you. So thank you so much, Ravi. Thank you so much, Rajni. Thank you so much, Gaurav. Thanks all the dear participants for joining in today. We would like you to invite for our Discovery Day, which will happen next week. So please book your slot with us at our business hotline number, which is 9717683838. Also write to us at feedback@franchiseindia.in. In case you wish to submit your suggestion, share your feedback with us, connect with us at a different social handles. Also, you can easily connect with the management team of Franchise India at their LinkedIn ID to get more information about different business options. And tomorrow, under our 12 p.m. webinar, we are bringing the brand from east part of the India, D-Mall Dental Clinic. That's the brand we are bringing tomorrow. Please do register with us to join this particular webinar. Registration can be there either by going to Facebook, where we have shared the registration link, or connect with us, call us at the hotline number. Thank you once again for joining in today. Have a very safe day. Thank you so much.